Good morning, dear student. Today we'll discuss about the fourth chapter of physics, light and associated phenomena. Okay, so this is the first part of this lesson. Okay, so in this lesson, beta, we'll learn about the understanding rectilinear propagation of light, study about the reflection of light, comparing real and virtual image, understanding curved mirrors, convex mirrors and concave mirrors, and so on. Okay, so first of all, today we'll discuss about the rectilinear propagation of light. उससे पहले बेटा, what do you mean light? First of all, light होती क्या है बेटा? Light is a form of energy, you know. So light is a form of energy that enables us to see things around us. जो भी चीज आप देख रहे हो, है ना, we see the things around us just because of light. And although light itself is invisible, आपको लाइट खुद नहीं दिखती, लेकिन लाइट के थ्रू आपको सारी चीजें दिखती हैं. Okay, and it makes things visible to us. Okay, and the object that give out lights are called source of light. जो भी आपको लाइट प्रोवाइड कर रहा है, जो भी चीजें आपको लाइट प्रोवाइड कर रही है बेटा, all are called sources of light. And sources of light can be natural or artificial. ये आपको पता ही है, सिक्स क्लास में हमने रीड करा था कि sources of light, artificial or natural. Okay, so next, and today's topic here, rectilinear propagation of light. ये क्या होता है बेटा? Rectilinear propagation of light. So simple definition है, light always travels in a straight line. Light कैसे मूव करती है? हमेशा straight line में. Okay, it is known as rectilinear propagation of light. So when object, कोई भी object है बेटा, उसको when object moves or travel in a straight line, you can say rectilinear motion. But here is a light. Okay, so light का केस में क्या होगा? So light always travel in a straight line. It is called, or you can say it is known as rectilinear propagation of light. So when when we switch on torch in a dark room, कोई torch आपके पास है, जैसे आपने switch on किया, we can see beam of light that falls on object. So this beam of light is always straight and not curved or zigzag, है ना. लाइट सीधी मूव करती है, ऐसा नहीं कि अब लाइट zigzag मोशन में जाएगी. कैसे मूव करेगी? स्ट्रेट जाएंगी बेटा. दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट. ओके, तो इसी को बेटा क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. सो इन विच स्टेट्स, इस स्टेट को क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन. सो इट इज बिकॉज of this property that shadows are formed when light faces any obstructions. यानी कि कोई भी चीज अगर बीच में आती है लाइट के, तो उसके जस्ट पीछे क्या बन जाती है? एक शैडो फॉर्म हो जाती है. ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट होता है. तो इसी को बोलते हैं लाइट प्रोपेगेशन. क्यों? बिकॉज लाइट कैन ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक हियर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो व्हाट डू यू मीन रिफ्लेक्शन? So reflection means, देखो बेटा, when a bowler bowls to the batsman, जब कोई बॉलर जब बॉलिंग करता है बेटा, तो उसकी जो बॉल है वो किस तरफ जाएगी? बैट्समैन की तरफ जाएगी. The batsman hits the ball and the ball changes its direction. The ball changes its direction. बॉल की डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है. Why? Similarly, when light falls on an object, when light falls on an object, it changes its direction and bounces back, है ना. So this bouncing back of light is known as reflection of light. So how can we define the reflection of light here? The bouncing of light off a surface. Okay, the bouncing back of light is called reflection of light. So based on the surfaces from where light is reflected, डिपेंड करता है सरफेस कैसा बेटा. The reflection can be classified into two types. First is regular reflection, second is irregular
reflection. So first of all, what do you mean regular reflection beta? Regular reflection means, देखिए, reflection that takes place through a regular and smooth surface. It means if there is a smooth surface, अगर बेटा कहीं पे smooth surface है और उसके ऊपर light ने क्या करा, bounce करा, okay? So you can say regular reflection. For example, see the diagram here. There is a mirror. Mirror is a smooth surface, okay? So when light strike in the smooth surface, okay, तो लाइट जिस डायरेक्शन से आएगी बेटा उसी डायरेक्शन से लाइट उसी एंगल से लाइट क्या करेगी, डार्क हो जाएगी. इट मींस दिस इज द सरफेस, स्मूथ सरफेस. तो अब अगर वहां पे बेटा स्मूथ सरफेस है, ओके, तो रिफ्लेक्शन किस तरह का होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा. ओके, इफ देयर इज सरफेस इज स्मूथ सरफेस होगा तो यू कैन से रेगुलर रिफ्लेक्शन. ओके, next here, irregular or diffuse reflection. Irregular, ये भी किस चीज पे डिपेंड करता है बेटा, सरफेस पे. देखो, so irregular means reflection that takes place through a rough and a dull surface. It means is known as irregular or a diffused reflection. Irregular or diffused reflection. Diagram, see the diagram, देखिए, reflection that takes place through a rough and dull surface. This one surface कैसा बेटा, uneven surface है, uneven है ना, यानी dull, or you can say rough surface. तो यहाँ पे कैसा रिफ्लेक्शन होगा, diffused reflection, or you can say irregular reflection. Irregular reflection scatters lights in the all direction. लाइट कहीं भी जा सकती है, जो लाइट्स की जो बीम है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है. लाइट्स इन द ऑल डायरेक्शन एंड हेल्प अस टू सी थिंग्स. ओके, एंड मिरर, जो मिरर है, मिरर इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेड ऑफ ग्लास. Okay, so one side with a metal such as gold, silver or mercury, whatever here. So generally mercury is used because it is shiny surface and it's a good reflector. Okay, so this is the reflection of light, diffused and regular reflection.